नहीं सर। Okay. Now we talked about relativism. Based on relativity, which is right, which is wrong, we find that out. Then moving forward is absolutism. Absolutism is this approach on to ethics argues that certain actions are inherently right or wrong. मतलब या तो सही है नहीं तो गलत है, regardless of their context or the circumstances that they occur. For example, an absolutist would argue that taking a human life is entirely unacceptable. ठीक है, एक मर्डर करना या किसी की जान लेना इज कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल. हु सेज दिस? एब्सोल्यूटिस्ट. ओके, वही रिलेटिविज्म में अगर चले जाएं हम, रिलेटिविस्ट विल से दैट अगर कोई किसी को फांसी की सजा सुनाई जा रही है या फिर किसी कैदी को सजा सुनाई जा रही है जिसमें ही शुड बी स्टोन्ड टू डेथ या फिर सर कलम कर दो या फिर समथिंग लाइक दिस, अगर सजा सुनाई जा रही है देन दैट इज राइट, क्योंकि कोर्ट सब कुछ सोच समझ के ही सजा सुनाया होगा ना, सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ही सजा सुनाई हुई होगी. सो दैट्स राइट. रिलेटिविज्म विल से दैट, व्हेयरएज एब्सोल्यूटिस्ट विल से दैट नहीं, एक इंसान की जान भी इंपॉर्टेंट है बहुत. That's another point of view, and I'm not saying that I'm supporting any point of view. I'm just talking about these are point of views. Okay, the main strength of absolutism is that provides a framework of rules that are easy for individuals and companies to follow. However, it is unclear whether an absolutist should find this framework of ethical rules should be religious in nature or simply down to what they feel is universally accepted. ये भी एक रहता है, देखो, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड अपने हिसाब से जो मठारते रहते हैं, अपने हिसाब से मठारते रहते हैं. आप कोई चीज करना चाह रहे हैं, आपको वो सही दिख रही, आप बोलते ये सही है बोल के सबको बोलते ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन वो सही भी सही है या नहीं है नहीं मालूम. एक सिचुएशन बन जाता, सब कर रहे हैं ना, मैं भी कर रहा हूँ, सभी करते हैं. अब जैसे कि देख लो, मेरा एक दोस्त है, नहीं अपना ही दोस्त है, हर्षद मेहता, पहचानते हर्षद मेहता को? क्या करा वो, उन्हें क्लास में क्या बोला, अरे मैं अकेला थोड़ी करता हूँ, ये सभी तो करते हैं ना भाई, मैं कुछ अकेले कहीं को पकड़े, वो तो क्या सब कर रहे तो तुम भी करेंगे. अपने घर का डायलॉग कैसा था, सब कुएं में कूदे तुम भी कूद जाते, बोलते ना. सब गलत कर रहे बोलते क्या तुम भी करे तो क्या सही हो जाता? नहीं, गलत है तो गलत है. ठीक है. Absolute may lead to problems where absolute rules conflict with one another. For instance, if you had to steal something to save someone's life, गलत है तो गलत है, खलास. ठीक है. Now note that absolutism is linked towards the idea of deontological ethics. Write down. We are going to come towards it. Theology and all those stuff is coming up. All those terminologies is coming in. Absolutism is linked to the idea of deontological ethics. This is linked to the word of German philosopher Immanuel Kant, who suggests that when faced with an ethical dilemma, an individual must look at the action being considered and deciding if it is inherently right or wrong. It ignores the consequences of the decision being made and instead focus on the individual meeting the moral duties. आप लोग को इतना सब एथिक्स के बारे में क्यों पढ़ाया जा रहा है? आप लोग ये भी सोचेंगे कि why are we even taught about all these ethics when after all we are going to be business decision makers and accountants. सबसे ज्यादा फ्रॉड वहीं होते हैं. ओके, अगर कोई नया चोर है तो वो बटवा मारता, ठीक है. अगर कोई और थोड़ा सा बड़ा चोर है तो बैंक में जाके चोरी करता. उससे भी बड़ा अगर कोई चोर है तो यहाँ पे घपले करते हैं. मतलब घपले करते हैं मतलब you manipulate all these records. अगर उससे भी बड़ा कोई चोर है वो तो बाबा जी की तीसरी आंख उससे भी बड़ा. तो ये लेवल्स है, levels of scams which happen across and it goes on. बाबा जी की तीसरी आंख में आपकी डायरेक्ट कनेक्शन करवा दूंगा ऊपर वाले से.
all the stuff. Okay, let's come back. Now, approaches to ethics in business. Imagine you are a company that runs a large chain of supermarkets. You have decided to an opportunity to expand into country G. This expansion will create large number of local jobs and is expected to earn you significant profits. Local officials in country G have made it clear that in order to gain the appropriate planning permissions, you will need to pay them money as inducements, in brackets bribe या उसको बोलो रिश्वत. This is common practice for officials in country G. Though it is illegal in your home country, what should you do? हाँ, दूसरी कंट्री में एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, लीगल नहीं है. लीगल रहता तो दिस इज अ लीगल फी बोल के बोलते हो लोग, लेकिन नहीं वो. The answer depends on your approach to ethics. अगर consequentialist है, would argue that your decision depends on consequences of paying the bribes. If you were egoist, looking at your own needs, you would probably pay the bribe, as you would still stand to earn a significant profit from the venture. You will take it as a cost and pay it. If you are a utilitarian company, you may also consider paying the bribe, as doing so will not only mean that you can earn large profit, but will provide jobs for many locals. Paying the bribe will therefore be for a greater good. Okay. Whereas pluralist would look at ensuring that the needs of none of the stakeholders are seriously compromised by paying the bribe. In this case, while the payment will involve some loss to our shareholders, paying the bribe will allow us to expand in country G. Then also they will pay. Relativist will look at the context of the decision of, in this case, bribery is commonly accepted part of doing businesses in country G. Therefore, he can be flexible with our approach and may consider paying the bribe. Absolutist would look at whether paying the bribe was fundamentally incorrect. In this case, bribery is illegal in our home country. And absolutist would therefore be likely to conclude that paying bribes to officials in country G would also be inappropriate, as doing so is always wrong. तो कौन पे कर रहा है bribe? Consequentialist, pluralist, relativist पे कर रहे हैं. Absolutist is not paying because गलत है तो गलत है, इधर गलत है तो उधर गलत है, सब जगह गलत है. Whereas बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा कंसिडर कर रहे हैं, अरे नहीं इसे एक खर्चा है भाई, छोड़ो, जानता है खत्म करो इसको बोल के पे कर देते. ठीक है ना. These are all approaches. Okay, these are all approaches how they go towards it. And you guys should be knowing, क्योंकि आपके पास ऐसे सवाल आएगा कि suppose if you are in this point of, suppose you are an absolutist, what are you going to do? Suppose you are a pluralist, what are you going to do? ऐसे सवाल आएंगे आपको, एक सिचुएशन ऐसी आएगी और सवाल भी ऐसे आएंगे फिर. Then test your understanding. Mia is a business manager in company A. She has 20 employees who report to her, and she has been told that she needs to reduce this number by 1. Mia decides that rather than making a member of staff redundant, she will instead reduce each employee's hours by 1/20, thereby keeping everyone in a job. What approach is Mia taking into this decision? मतलब एक को निकाल दो बोले तो एक को निकालने की जगह क्या कर रही है, सबके घंटे रिड्यूस करके वो एक को भी रखी, सबको रखी काम पे, सबका थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ, एक घंटे का नुकसान हुआ. बताओ. सी, इगोइस्ट, प्लूरलिस्ट, यूटिलिटेरियन. अच्छा, यूटिलिटेरियन किसके अंदर आता? कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट में आता. कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट के अंदर कौन सा? सबका फायदा देख रहे हैं, सबका साथ सबका विकास. ठीक है. So you are saying utilitarian. Who else says what? Others? Anyone having other opinions? No, the income is a little bit reduced to one, but totally the cost is going to remain the same. You have to go back and check with what all things are happening to make a decision. Content फिर से देखो और फिर decision लो.
इगोइस्ट में अपना फायदा देखते हैं, प्लूरलिस्ट में देखो, just go back and see what is pluralist. Trying to cater the needs of all stakeholders without seriously compromising the interest of one group. For example, a mining company अच्छे से वो करेगा. Utilitarianism, this action is considered to be morally correct if the outcome is favorable for the greatest number of people, or the greater, for instance, if an accountant asked to cover up point of keeping quiet is also. अब आपके ऊपर है, या तो यूटिलिटेरियनिज्म है या तो प्लूरलिस्ट अप्रोच है, दोनों में से कोई एक है. आप सी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप जैसा आंसर देखते हो ना, पहले करे ना. सर सी रहता तो सबका फायदा होता था, इसमें सबका फायदा थोड़ी हो रहा सर, सबका पे कट कर वो हो जा रहा, कम हो जा रहा. लेकिन उसमें क्या होता मालूम, इट इज नॉट जस्ट द अमाउंट विच यू सी हियर, ओके, इट इज जस्ट देयर मेंटल पीस आल्सो. अब जैसे कि 20 लोग काम कर रहे, एक को निकाल दिए तो बाकी के 19 समझते हम भी कभी भी निकल सकते, वी कैन ऑल्सो बी आउट एनी टाइम. तो वो क्या है, एक प्रॉब्लम आ जाती, एक 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 बात फैल जाती कंपनी में, कह रहे भाई निकाल रहे हैं एक एक करके, तो थोड़े इसलिए लोग सी क्या. नहीं हो सकता सर, सी में सबका फायदा होता ना, इसलिए इसमें तो मेंटल हेल्थ भी वो हो जा रही है, think again. मेंटल प्रेशर भी बढ़ जा रहा सर. I want बी more भी people हो coming सकता. up with more, come up with more explanations on this. Sir, I think it's pluralist because all of these stakeholders are being benefited because of this All the decision. stakeholders are being benefited. Okay. All the stakeholders are being benefited. Who all say utilitarian? हाँ, क्या बोले? प्लूरलिस्ट. अरे अभी तो नहीं वापस जाकर बताया ना आप लोग को. कहाँ गया? अभी तो बोला ना, या तो यूटिलिटेरियनिज्म रहना, नहीं तो प्लूरलिस्ट अप्रोच रहना. प्लूरलिस्ट क्या बोल रहा है? All stakeholders without seriously compromising the interest of any one group. एक को निकाले तो स्टेक होल्डर को कहाँ फायदा हो रहा है, एक को नहीं निकाले तो फायदा हो रहा है ना. आपका जो मोटिव है, पूरे ग्रुप का जो मोटिव है, पूरे ग्रुप की एनर्जी वही इंटैक्ट रहती, अच्छी रहती. कम करो ओवर कॉस्ट, कम करो ओवर कॉस्ट. तो मैं बता, उन लोग बोले नहीं नहीं वैसा नहीं होता भाई, कम कर लेंगे लेकिन रखेंगे सबको, सब लोग काम करना इंपॉर्टेंट है वो सब. कंपनीज में होते रहता भाई ऐसा, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस है मालूम. अगर सपोज किसी एक को निकाले कंपनी में से, तो दूसरा भी यार निकल गया ना बोल के निकल के चल जाएगा मालूम. ऐसा भी होता कभी कभी. अजीब लोग हैं ऐसे भाई. देखो क्या, दिस ह्यूमन साइकोलॉजी इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल. ठीक है, सपोज आप जैसे कि वो बोलते हैं ना, वो सांप को आप दूध पिला लो, कितना पिलाते पिला लो, लेकिन अगर वो उसको डसना है तो आपको डस कैसे रहता, वैसा रहता हो. आप कितना भी जैसे एम्प्लॉय को अच्छा रख लो, अगर उसके नियत में काटना है तो काट के ही जाता, मतलब नुकसान दे के ही जाता. अब ऐसे भी है कि जैसे आप किसी को कितना भी नुकसान दे रहे हो, लेकिन आपके फायदे का सोचा तो फायदे का ही देखते ना. तो देर आर पीपल, डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन स्पीसीज आर देयर अवेलेबल. किसी को देखकर आपको ऐसा आश्चर्य होता कि ये इतना अच्छा कैसे हो सकते हैं ये लोग. ठीक है, फिर किसी को देख के ऐसा शॉक हो जाते कि अरे इतने बुरे भी होते क्या लोग, बोल के. ठीक है, like why business ethics are important. Business are part of society. Society expects as individual to behave properly and similarly expects companies to operate certain standards. For the organization, good ethics should be as seen a driver of profitability rather than burden on business.
अच्छा काम करते रहना चाहिए businesses को आगे बढ़ने के लिए. An ethical framework is a part of good corporate governance and suggests a well-run business. Investors are reassured about company's approach. Employees will be motivated in the knowledge that they operate in an environment of good ethical corporate behavior. अच्छी जगह काम करेंगे तो ज्यादा टाइम तक काम करना भी बोलता. Consumer and employee expectations have evolved over recent years. Consumers may choose to purchase ethical items, fair trade coffee and bananas, even if they are not the cheapest. Employees will not blindly accept orders to act in a manner they are personally believed to be unethical. तो क्या होता है, एक अच्छा बिहेवियर चलता रहता कंपनी में, जो सही है वो सही के हिसाब से अच्छे से एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते उसको. ठीक है, that's what it talks about. Then moving forward, there's another illustration. The fair trade mark is a label on a consumer product that guarantees the disadvantaged producers in the developing world are getting a fair deal. For example, the majority of coffee around the world is grown by small farmers who sell their produce through a local cooperative. Fair trade coffee guarantees to pay a price to producers that covers the cost of sustainable production and also an extra premium that is invested in local development projects. Consumers in the developed world may be willing to pay a premium price for fair trade products, knowing that the products are grown in an ethical and sustainable fashion. जैसे ऑर्गेनिकली आ रहे हैं यहाँ पे, तो कंज्यूमर विल बी रेडी टू पे अ प्रीमियम फॉर इट. क्योंकि उस प्रीमियम क्यों पे करेंगे उसके लिए? बिकॉज दे आर गोइंग टू गेट हेल्थ बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. Okay, is that clear? I have this test understanding in front of you. Can you just answer this? And professional ethics, we will be starting it tomorrow. Answer this. Is it false because it's not always a cost to the business? Yes, what did you say? Is it false because it's not always a cost to the business, right? Okay, adhering criticism is always a cost. No, yeah, it's false. It is false, right? Yes, it is false. 100% it is false. So now we have come towards half part of the ethics. Till now we were talking about general ethics and all that stuff. Tomorrow we will be going towards those ethical principles which are going to be there, like these ethical fundamental principles which are going to be part of your ACCA journey throughout and your life throughout. These stuff, IFAC code जो है, IFAC code of ethics. IFAC क्या है? International Federation of Accountants. उसके हिसाब से we'll be working on it, and I would always say you guys कि थोड़ा सा अपने से रिसर्च करके आओ क्लास को, अच्छा रहेगा. It will look good. अपने एग्जाम्पल्स लेकर आओ. कल ये पढ़ने वाले हैं हम आगे का. देखो, तो अपॉर्चुनिटी लो कि कुछ पढ़ कर आओ. ठीक है? So I'm ending this session for now, and in I guess 15 to 20 minutes I will share the management accounting link. You guys can take your break for it.